Yeah, dear learners, today we are going to discuss about the introduction of machine learning, and we will see few of the algorithms which are used for machine learning. We will try to cover some examples as well to understand it well. So we know that machine learning, which is a subdomain of artificial intelligence. Machine learning concept is based on, in fact, the biological learning as any human being learns. So we know that how a child, when he or she is born, how he learns. He learns from his parents, he learns from himself, herself. So this machine learning concept is also based on similar principle. It was very old concept, but in last few decades it becomes very popular because it is used in almost every domain of the life, where it is agriculture domain, whether it is medical field, whether it is computer field, whether it is automobile field. Everywhere the machine learning methods are used nowadays. The if we see the definition of the machine learning, or what exactly the machine learning is, so way back in 1965, in fact Nielsen have given the definition that a machine learning is broadly defined as a device whose actions are influenced by past experience. That is, if any task is going to be repeated by the machine or the program, then its performance will improve with the time, and that the kind of program or that kind of machine is known as machine learning. Next, in 1983, Simon has given the definition that any change in a system that allows it to perform better the second time on repetition of the same task or on another task drawn from the same population. That is, if similar kind of tasks are being repeated again and again, then its performance is improved through the machine learning programs. The best definition which is being given by, in fact, in a book which is written by Tom Mitchell, published by Tata McGraw-Hill publication, they have used three terminologies to define the machine learning. One, they have used the training samples or experience. Another component they have used that what is the task to be learned, and next third parameter they have used that how to measure the performance of the program which has been trained. So based on this, they have defined that a computer program is said to learn from experience, which is training samples, with respect to some class of task, and performance measure parameters which are used to measure the parameters if its performance at task on is measured by P improves with experience. That is, if the training is performed with respect to the training samples, and if testing is performed, then its performance, which is measured by some performance measuring parameters, should improve with time. So that is the definition of machine learning. So now let us see few of the examples where uh, where we can use the machine learning. For example, a very basic problem is how to recognize a handwritten characters. So handwritten character, we know that it which is on the paper, and we want to convert that image which consists of words or alphabets or sentences into text form. So here the three things as per the machine learning definitions is: what is the task to be learned, what is the performance measuring parameter, how we can measure the performance, and what is the training sample or experience. So in this problem, the task is to recognize and classify handwritten words or alphabets or characters. That is the task to be done. How we can measure the performance, whether the task is done in better way or not. So we have performance measuring parameter, for example, percentage of words or alphabet which are being correctly classified or identified or converted into text form.
That is one of the performance measuring parameter. And training experience or training samples, it may be a database of handwritten words or characters which are having with the classification, that is what kind of word it is, what kind of alphabet it is, that information is already available in the training set. So this is one of the very simple example of machine learning. Another example, if we take, which is very popular, how to play a checkers game. If we want to write a machine learning program for playing a checkers game, then first of all we have to define the three things. What is the task? Here the task is to play the checkers game. And what is the training sample? In fact, the training samples are rules and regulations which are being going to be used for training the program. So these rules and regulations may be used to play the checkers program against itself or against an expert. How we can measure the performance for this program? We can measure the performance, how many times it won the game. Say if it has played say 10 times and 9 times it won, then we can say its performance is 90%. Another very popular example we can take that of driverless car. Nowadays we know that the automobile sector is working in this domain, and big companies are developing driverless car which are being driven by machine learning programs or robot. So what is the task here? The task is to drive an automobile car on a say highway. Then what is performance measuring parameter? So performance measuring parameters may be more than one. It is not like that there will be only one performance measuring parameter. There may be n number of performance measuring parameters. For example, for this particular problem, the performance measuring parameter may be average distance traveled before an error or mistake is committed by the robot or program, which may be judged by an expert person. Or we can say average time it traveled without making any mistake. That may be another performance measuring parameter. And what is the experience or the training samples? In this case, the training samples are in fact a sequence of images and steering commands which are being recorded while observing a human driver. So that may be used as training sample. So in machine learning case, basically the learning or the training are performed either using supervised learning or using unsupervised learning. Though there is one more type of learning that is known as reinforced learning, but these two are very popular. Supervised learning, which the main objective of supervised learning is classification of objects, classification of the task, or classify the outputs in different classes. So in this supervised learning, we have the training samples, training data in the form of observations or measurements, which are accompanied by a label indicating the class of the observation. That is, whatever training sample we have, which may contain a number of parameters, features or attributes, one of the attribute is in fact the output or the class level. And when we do the training using supervised learning on this data, then when a new data is there which is going to be tested, then using the training sample, training programs, we find its class. Next is unsupervised learning. In the difference between supervised and unsupervised learning is that in unsupervised learning, the training sample do not contain the class level, do not contain the output class in fact. So for the given training samples, when we train a program, and if during the training of the program, in fact, we create different clusters or groups, or we ourselves creates the classes, and whenever a new training sample is there, if we want to test what should be it, from which cluster it should belong or from which class it should belong, then we
compute its similarity, its feature vector, and compare it with the already trained clusters and see from which cluster it belongs, and accordingly it is assigned to that particular cluster. So meaning to say that in this cluster means all the samples, all the observations which belongs from a particular cluster, they carry similarity among themselves, they are similar, so that's why they are grouped into the same cluster. So these are two, in fact, the popular learning methods, supervised and unsupervised. So I am going to discuss few of the methods which are used for classification problems, or we can say which comes under the supervised learning. So in machine learning there are large number of classification algorithms, and few of the popular algorithms are mentioned here. One of them is a naive Bayes algorithm, which is very popular and used for large scale of problems. Another is decision tree based algorithm. Decision tree based algorithm itself creates many algorithms which are very popular and they are used on varieties of problems. Memory based reasoning method is there, that is known as k nearest neighborhood classification algorithm, which is also used. Support vector machine, linear and non-linear support vector machines are used. Neural network itself is a very wide area. In fact, there are large number of neural network models which can be used for classification problems, and rule based methods. So these are few of the classification techniques or method which one can use for classification purpose under the supervised learning. Now let us take one of the method, and before discussing the method, classification method, let me discuss what are the popular clustering techniques. So as we have seen that clustering techniques comes under the unsupervised learning. So in this case we already have discussed that the output or class level is not known. So we have to train the model so that the clusters are being created, and that trained cluster can be used for classification or clustering of the unknown samples. So few of the popular clustering techniques are in fact the k-means clustering algorithm, partitioning around mudoid algorithm, which is known as PAM or k-mudoid. Hierarchical clustering is very popular clustering techniques. Density based clustering, which is another kind of clustering technique. So these are few of the algorithms, clustering technique, popular algorithms which are mentioned here. So let me discuss one of the classification method, in fact, and that is known as Bayesian classification, which is very popular classification algorithm and is used to solve a large number of problems nowadays. So this Bayesian classification method is in fact based on the probability theory. In this case, what we do, we compute the posterior probability. Posterior probability, which is defined here in this, you can see that it is P, a probability of unseen sample X over class level C. So that is being calculated based on some prior probability. So here in this one, if it is a classification problem and if there are say if it is a binary classification problem where there are two classes, say positive and negative, so we compute the posterior probability with respect to the class level positive, as well as we compute the posterior probability with respect to class level negative. And the idea is that to assign this particular unseen sample to the class level such that the posterior probability is maximal. So the basic formula which is used for this Bayes theorem is given by this posterior probability is calculated by this expression, where it consists of three components. One is that of conditional probability, that is P of X such that its class level is C, that is conditional probability, and another component is prior probability,
and this probability of, in fact, the probability of the class labels, and Px is the probability of the occurrence of data value x, and it is constant for this. Px is constant for all the classes. So if we ignore this denominator part, then it is not going to affect the result. So we can say that this posterior probability is directly proportional to the conditional probability multiplied by the prior probability. So let me take one example, then it will be more clear how it works. In fact, this is the example where we have a training data set. So this training data set consists of 14 training samples. So in this training data set, we can see that it consists of 5 columns, and each of the columns represents the attribute. So out of these columns, the last column is in fact the class level. This is the, because it is a supervised learning, so its a class level is known a prior, and rest 4 columns represents the attributes based on which the training is to be performed. So we can see that the first attribute is outlook. The example is based on whether one should go to play a game or not, outdoor game or not, based on this data sample. So if we see the outlook attribute, then this attribute can have different values. Like in this example, we can have 3 values, possible values: sunny, overcast, and rain. Similarly, temperature is another attribute. In the temperature, we can see that it have 3 values: hot, it can have another value mild, and cool. Similarly, humidity is having 2 attribute values: high and normal. Wind is having again 2 attribute values: false and true. So we train the model using Naive-Bayes theorem for this training sample based on these 4 parameters, and then we can use that model to classify an unseen sample. So in this example, if we see, if we out of the 14 training samples, if we see, there are 9 training samples with class level positive. 9 training samples are with class level positive, and 5 training samples are class level negative. So the prior probability of class, in fact, for negative will be 5 by 14, and for the positive class level it will be 9 by 14. Similarly, next is we calculate the conditional probability of different attribute values with respect to the class level. For example, the outlook is one of the attribute value, and it may have 3 values: sunny, overcast, and rain. So we compute the conditional probability of these 3 values such that the class level is positive. So out of 9 positive class levels, for outlook attribute, 2 are in fact having the attribute value sunny. So its a conditional probability is 2 by 9. Similarly, for the overcast, the overcast value for outlook attribute, the conditional probability is 4 by 9, because there are 4 overcast values whose class level is positive. We can verify it from this example. One is this one, its class level is positive. Another is this one whose class level is positive, and third one is this one, and fourth one is this one with class level positive. So that's why its a conditional probability comes out to be 4 by 9. But if we see the conditional probability of this overcast attribute value with respect to the negative class, because there are only 4 overcast attribute values and all 4 are negative, that is 0 sample is there with negative class level, that's why its conditional probability comes out to be 0. So this kind of calculation we do for all attribute values, that is for temperature also we do it, the calculation of conditional probability with respect to the attribute values for temperature, and that is hot, mild, and cool, such that its class level is positive, and similarly with respect to the class level negative.
So once we complete all these calculations and also the prior probability of the class we have already done, thereafter we can use this for classification of an unseen sample. Let us see how we can use this. For example, we have an unseen sample x. X is been given by say rain, hot, high and false. So this first attribute value, that is outlook. Outlook is rain, and the second attribute value, that is temperature. Temperature is in fact hot, and then the next attribute value, which is weather, this humidity is high, and the fourth attribute value is false, that is with respect to the wind. And we have already calculated the conditional probability of rain, hot, high and false with respect to the positive class and with respect to the negative class. So we have to put those values, like we have computed the conditional probability of rain such that its class level is positive as 3 by 9, and similarly for hot we have calculated it to be 2 by 9, which is mentioned in previous slide. Here we can see that P of hot for temperature is 2 by 9 and rain is 3 by 9. So we put these values here in this one. So 3 by 9 into 2 by 9, then multiplied by the conditional probability of this high such that its class level is positive, and conditional probability of false, that is this term whose class level is positive, and then we multiply it with the prior probability of the class, that is positive 9 by 14. So ultimately we get the posterior probability as this one, and the same type of calculation is done for the posterior probability such that the class level is negative in the same way. So we get the posterior probability when the class with respect to the class level negative as well as with respect to the class level positive. So by looking this posterior probability, where we can see that this particular unseen sample belongs to which particular class. The posterior probability, the bigger the posterior probability with respect to a class, the unseen sample belongs to that particular class. So in this example we can see that this is bigger value than this one. So this is classified as negative, that is one should not go for play in such situation. That is, we have seen one of the example how we can use the posterior probability naive Bayes concept for classification purpose. So here in this example we have seen that all the training samples attributes are of categorical type, that is there are fixed number of values. For example, here in this one, refund is one of the attributes and its possible values are yes and no. So this is a categorical attribute. Similarly, marital status is another attribute which is of the type of categorical, but taxable income is a continuous attribute where it can have infinite number of attribute values. So in such case, how we can compute the conditional probability? So in such kind of problems, in fact, there is used two methods. Either we can discretize the continuous value, that is a binning concept can be used, and based on that we can group the continuous values into two values or three values or whatever is our need, or we can use probability density estimation functions. So in the probability density estimation functions we can use normal distribution, or we can if it follows a Gaussian or Laplace distribution, so we can use the method accordingly. So very quickly let me see how we can use the normal distribution in naive Bayes when the attribute is of continuous type. So in this one there is a formula, this particular formula in fact is used, where we can see that the conditional probability is being calculated by 1 by under root 2 pi sigma ij square multiplied by e to power minus xi mu ij whole square divided by 2 sigma square ij.
where this mu ij is in fact the mean, sample mean with respect to that particular class level. Say here in this one there are two class level, negative and positive. So we calculate this mean value with respect to negative class level and with respect to positive class level separately. So then this sigma is in fact the sample variance, that is uh, difference between square of difference between sample mean and the sample value. So we calculate this sigma square, it is been calculated here at in this slide in fact. So we can see that it is been given by the deviation from the mean we have computed for negative class, say 110. So 125 minus 110 square, and then we sum all these values and finally we get the value of sigma square. So we have the mu ij, we have the sigma value of sigma square, 2 pi we already know, and for whichsoever continuous value xi, say we are going to calculate the conditional probability for income is 120k. So what we do, we put all these values and we calculate the conditional probability with respect to the class level. Here in this one it is calculated with respect to class level no. Similarly we can do the similar kind of calculation with respect to the class level s. And now we have got the conditional probability for the continuous attribute also, and for the categorical attributes we can calculate as usual, and thereafter we can calculate the in fact the posterior probability of the unseen sample as we did in the previous example. So based on the posterior probability we can check from which class this particular unseen sample or test data belongs. So that is how the naive Bayes theorem works for the continuous attribute value and categorical attribute value. The naive Bayes classification, the beauty of this classification is that it can make decision with partial information. That is, if we have the partial information, we do not have the value available for all the attributes, even in that case also it may give the result. For example, in this one if we have say only the value of, in this example we have the value of this parameter, this attribute, marital status is known and this refund and taxable income is not known, then how we can use the naive Bayes to classify the unseen sample based on only single attribute value? So in simple way we can calculate the conditional, we already have calculated in fact the conditional probability of divorce. So we can use that conditional probability along with the prior probability, and we can find the output from which class this particular sample belongs. Similarly, if we have say another attribute value also available, that is marital status is known, refund status is also known, then also we can do the calculation and we can decide from which class this particular sample belongs. So meaning to say that this naive Bayes classifier in fact works when we have even partial attribute information available. That is the beauty of this. Then the issues, what are basic issues with naive Bayes classifier? The basic issues are in fact that because it's a probability which is being calculated, but if any of the probability is 0, then we know that entire posterior probability calculated will be 0. So that is one of the drawback of this naive Bayes classifier. Now I want to avoid this in fact this problem where this 0 value is going to create the problem. So we can use Laplace estimate, or we can use the M estimate function instead of normal method. So the summary of this naive Bayes algorithm is that it is robust to isolated noise points. It handles missing values by ignoring the instance during probability estimate calculation. It is robust to the irrelevant attributes as well as redundant and correlated attributes will violate class conditional assumptions. So these are few of the introduction about machine learning and one of the classification algorithm we have seen. Okay, thank you.
current global economy and digital era, learn or perish is the order of the day for all adults in all sectors of life. As a result, adult education and lifelong learning have assumed great significance. IGNOU as a national university has played its role by way of coming up with the Master of Arts in Adult Education program, MAAE. MAAE program focuses on different aspects of theory and practice, policies and programs, as well as research, among other things related to adult education. MAE is a 2-year modular program with multiple entry and exit options. Students who complete first year of the program will be awarded with the postgraduate diploma in adult education. In case they want to continue, they will complete second year program and they will be awarded with the Master of Arts in adult education. MAE program consists of 10 courses, 5 courses in each year, 8 theory courses, 6 credits worth, and 1 practical course of 10 credits in the first year and 1 dissertation course of 10 credits in the second year. Practical course of MAAE is divided into 3 components, namely community-based practical activities, workshop-based practical activities, and adult education training center or institution-based practical activities. And the student has to complete all the 3 components for completion of this practical course. The minimum qualification required for admission to this program is bachelor's degree from any recognized university. The minimum duration is 2 years and the maximum duration is 4 years. Instructional system follows multimedia approach. The major medium of instruction is self-learning print materials, which is supplemented by other media such as audio-video programs, broadcasting, that is interactive radio counseling, teleconferencing, personal contact programs or counseling sessions at the study centers, workshops and field work as well as internship at the institutional level. Those who seek out a master's degree in adult education have a myriad of career and specialization options. They can go further for higher studies, that is research in various fields of adult education. Namaskar and hello to all the listeners, viewers and learners who are watching us live in today's teleconferencing session. I am Dr. Gitika S. Johri, Faculty at School of Vocational Education and Training and Program Coordinator for the Diploma in BPO Finance and Accounting program. Learners, my today's session is basically introduction to the Diploma in BPO Finance and Accounting program and also an introduction to the Certificate in Communication and IT Skills program, which is modular of the DBPO FA program. So let's begin with today's session by trying and understanding what is finance and accounting in BPO. So learners, as we can see on the screen, Gartner has defined finance and accounting business process outsourcing as the delegation of finance and accounting activities to a third
party service provider. Now, finance and accounting business process outsourcing consists of support for multiple business processes in the F&A domain through a single BPO contract. Now, what the companies do, rather than hiring and managing an in-house financial staff, the BPO partners will handle your accounting. Usually, such companies offer financial accounting services, bookkeeping, payroll processing, tax planning and returns, payable and receivables accounts management, bank reconciliation, and financial reporting. Let us understand what is DBPO program which we are offering through the School of Vocational Education and Training, IGNOU. Now, this is an innovative program in the open and distance learning system, which is the ODL system. The program has been designed and developed by academicians and subject matter experts from the BPO industry. This particular program it ensures imbibing key skills related to finance and accounting in the BPO industry. It incorporates a unique blend of theory and practical courses, qualifies the student to apply to large BPO organizations, and of course, as I mentioned earlier, that modular of this program is the Certificate in Communication and IT Skills, which is also called as CCIT-SK, and it is offered as a standalone program. Now, let us have a look at the program structure of the DBPO FA program. We can see, learners, that this program is of 32 credits, which is divided into 2 semesters, Semester 1 and Semester 2. Now, Semester 1 has 5 courses. What are the 5 courses? The first is BPO-I-101, which is Introduction to Finance and Accounting BPO. It's of 2 credits. The second course is BPO-I-102, which is Fundamentals of Accounting. It's of 4 credits. The third course is BPO-I-103, which is Procure to Pay, which is also called as P2P or Accounts Payable. This is again of 4 credits. Then the fourth course is BPO-I-104, which is Order to Cash, also called as O2C or Accounts Receivable. This is of 3 credits. And the last course under Semester 1 is BPO-I-105, which is Record to Report or also called as R2R. This is again of 3 credits. Now, the courses which are being offered under Semester 2 of the DBPO FA program are BPO-I-006, which is English Communication. It has both a theory as well as a verbal component. It is of 8 credits. And the second course in second semester is BPO-I-007, which is IT Skills. This also has a theory and practical component, again of 8 credits. Now, these 2 courses, they are also being offered under the CCIT SK program, which is a standalone program. Now, in this screen, you can see the entire program structure. 32 credits, finance and accounting is the semester 1, consisting of 5 courses of 16 credits. Then we can see semester 2, which has got 2 courses, English and IT. Here we have also mentioned, learners, that there is an exit option after semester 1, which is available only for working professionals who are working in any kind of industry, whether it is BPO industry or any other industry, and they can exit out of completing semester 1. Now, learners, let us have a look at the content of the courses, of all the rather 7 courses. The first course is BPO-I-101, which is Introduction to Finance and Accounting BPO. So here, learners, we have tried to give you an overview of the Indian BPO industry, the organization of the BPO industry, what the BPO industry looks like, how it is organized, what is the overview of finance and accounting outsourcing, because here our course is Diploma in BPO Finance and Accounting. So here we are giving you an overview of the finance and accounting outsourcing. What are the job and career prospects in the BPO industry, particularly in the finance and accounting domain, and what is the type of information technology and how is it used in the BPO organizations. Now, coming on to course 2, which is BPO-I-102, Fundamentals of Accounting. Now, this particular course has been divided into 4 blocks. The first block is Accounting Basics, where we basically introduce you to what is accounting, what are the different accounting principles, what are the accounting standards. Second block is Accounting Process. Here we will discuss with you what are how the journals are recorded in journals of the business transactions are recorded
basically what is journalizing, then how these journal entries are being posted into different ledgers, how the ledgers is being classified, then what are the different type of special purpose subsidiary books, and rectification of errors. Because learners, like when we are posting some entry or we are journalizing some entry into a ledger, or we normally see that for example, if it is an amount of rupees 1000, we by mistake we uh, we write it as 100. So this is a kind of an error which we can complete, where there has to be a debit entry, maybe for something wrong we do it as a credit entry. So these are some of the errors which can be committed when we are posting your journalizing the transaction, and then posting them to the different ledgers, then preparing the trial balance, and so on and so forth. Block 3 consists is of financial statements. This talks about what are the accounting concepts of income, expenditure, and receipts. It talks about final accounts of business organization, particularly to a sole proprietorship or a sole trader, what we call, and with respect to that, how the trading and profit and loss account and balance sheet is prepared. Then in this particular block, we have also discussed about adjustments in final accounts and final account with adjustments. Then the last block under this course 2 on fundamentals of accounting is preparation of corporate financial statements, where we will be discussing about provision and reserves and final accounts of a company. We have already discussed final accounts with respect to a sole trader in block 3. Here in block 4, we will be discussing final accounts of a company. Now moving on to the third course, which is BPOI 103, Procure to Pay, also called as P2P or Accounts Payable. This has been divided into 2 blocks. Block 1 will give you an overview and what are the different phases in the Procure to Pay process. Here we will be introducing you to the Procure to Pay, what is outsourcing of Procure to Pay, what are the source documents which are involved when we are doing procurement to payment, and what is vendor master maintenance. Apart from that, in this particular block, we will be also discussing about what is the procurement activity, how is it done, how is the invoice processing cycle taking place, what do you mean by invoice on hold, why is the invoice kept on hold, what is the payment process, and vendor help desk. Then block 2 of this particular course consists of issue management, control, and metrics, where we'll be discussing about the different quality checks, the issue management, accounting entries for the P2P process, metrics and best practices, overview of travel and expenses process and its different stages. So learners, let me tell you that after completing the first 2 courses, that is the first course on Introduction to Finance and Accounting, BPO, and Fundamentals of Accounting, from course 3 onwards, we are discussing basically the processes which are required in the BPO industry in the finance and accounting domain, which are Procure to Pay, Order to Cash, and Record to Report. So that is why we can see that in these particular in this particular course, we have different quality checks, because these are the processes under which the team works, and under each process there are certain stages they have to go through, and if at some stage something goes wrong, so a quality check has to be there at every stage. So if there is any kind of a rectification which has to be taken place at that point of time, it is better to get it done there and then. Otherwise it'll go on to the next stage, and coming towards the end, we will not be able to understand where this particular problem has occurred. Now moving on to the course 4, which is BPOI 104, which is Order to Cash, also called as O2C, and Accounts Receivable. Here, learners, we have discussed about Introduction to Order to Cash cycle, what are the stages of Order to Cash cycle, what is credit review, because most of the time when we are selling the services or when we are selling a product, we are not doing it under cash transaction, we are also doing it under credit, because the amount is not so small, the amount is huge, it is voluminous, the transactions are too many, and so in such a case maybe the customer is not able to pay the entire money in cash. So in that case we involve the credit part of it, and before going to the credit part of it, we need to understand whether what is the whether the client or whether your customer will be able to pay that particular credit or time. So again, there are certain processes or certain checklists, which have to be, checked, when we are going through this process of credit review. Then there is order management and invoicing, collection, accounts receivable, then order to cash operations and quality checks in the O2C.
cycle. So this is under course 4. Now coming on to the last course under semester 1, which is BPOI 105, which is record to report or R2R. Here learners, we will be giving you an overview of what is record to report process, because you know why I'm saying process every time, because these are all the processes in the BPO cycle, you know. Then overview of reconciliation. Here comes the concept of reconciliation, that you know you have to match all your accounts, all your books, because there should not be a debit balance or a credit balance. Both should tally towards the end. Both should reconcile. Both the books should reconcile rather. Then how is the accounting of fixed assets done? What is depreciation accounting? What do we understand by cash budgeting and forecasting? What do you mean by cash flow management? How is the cash flow management taking place? Whether it is inflow of cash, whether it is outflow of cash, and how it can be, how we can take care of the cash inflow and outflow. Then what are the control and metrics of R2R? And finally, reporting. After everything has been done, reporting. So this is the entire unitization or content which is we've just gone through for all the 5 courses which is under semester 1 in finance and accounting domain. Now learners, let us move on to the content which is available, or the unitization of the second semester courses, which is English communication and IT skills. So if you go through this slide, we can see that the English communication skills course has been divided into 8 different blocks. The first block talks about social skills and business communication. Here learners, in this particular block 1, we will be discussing about what are the greetings and introduction, what is the importance of small talk in the business, what do you mean by language and culture, and what are the basic business etiquettes. So this will all fall under your block 1. Block 2 is telephone conversation, where we will be discussing about what are the features of telephone conversation, how you are making a call, how you are arranging a call, and how you do take messages, what do you mean by voice call, what do you mean by conference calls, what do you mean by video conferencing. So this is what will come under block 2. Now under block 3, which is business correspondence, here we will be discussing about what are the different modes of correspondence: external correspondence part 1 and part 2, and internal correspondence part 1 and part 2. The fourth block is on customer service, where we will be dealing with the different types of customers, because there are different type of customers in each workplace. They can be customers who are very soft. They can be customers who are not aware of so many things, very ignorant customers. They can be customers who are very hard in their talks, very rough in their talks. So to manage such kind of customers, what are the different types of customers, has been discussed in this particular block on customer service, because we are providing services to the customers, and if the customers are happy, then of course we are also happy. So here, when we're talking about the different type of customers, we need to understand what are the essentials of customer service, what do you mean by ownership and accountability, how do you handle complaints. You have to be very patiently you have to handle the customers. You just cannot even retaliate back to them. You have to be soft spoken to them. You have to understand what they're asking for, what is their query. So how do you handle such kind of complaints has been discussed in this particular unit on customer service. And apart from that, this is not the first time that the customer will be coming. You have to build a rapport with that customer, so that again and again he is able to contact you. Then the probing and all these aspects have been discussed in this block on customer service. Then comes block 5, which is on presentations. Now learners, in this particular block on presentations, we will discuss about how a presentation has to be prepared. What are the essentials of presentation skills? Then how the outline and structures have to be done when you're preparing a presentation. How do you include the visuals? How do you include the diagrams? How do you include the graphics when you're preparing a presentation? And how do you end the presentation? So all these aspects have been discussed in this block 5 on presentations. Then coming on to block 6, which is on meetings. Now, how to set up a meeting, what are the different aspects related to a meeting, before the meeting, during the meeting, after the meeting, what are the different types of meetings, how do you participate in the meeting, how do you prepare the minutes in the meetings. All these topics have been discussed in this block 6 on meetings. Then the next block
7 is on cross-cultural communication. Since we are talking about BPO industry learners, we know that it is not only it is all across the borders. It is not only domestic or indigenous BPO organizations we are talking about, but over the globe, around the world. Because then we have to understand the culture, the languages, so many other things between the two countries. So maybe like the time zone, what is there. So we really need to understand, if we want to build customers, we really have to get into the nerves of getting their what is their language, what is their religion, what is their culture, and the other aspects related to it. What is the kind of time zone which is available, and you are traveling to a different part of the country. How do you manage your clients there also? So all these cross-cultural communications, or we have to be knowing when we are traveling. Then the last block under this particular course in English communication is getting ready for a job. Here, learners, we are preparing you for the job. We are explaining you how to write your CV and application, how do you make your portfolio, how do you write your portfolio, and how do you prepare for the interview, whether you are facing an interview which is in the walk-in mode, whether you're facing an interview which is in the telephonic mode, or it is in the video conferencing mode. How do you appear for the interview? How do you talk in the interview, what should be your gesture, what should be your facial expressions, all has been discussed in this particular block on getting ready for the job. And last but not the least, even about group discussions we have catered to when we are talking about this particular block on English communication. So learners, with this we finish the 6th course, which is on English communication. Before that, I also want to tell you, learners, that we discussed in the beginning that the English communication course consists both theory and practical aspects. Practical means in the form of verbal examination. So we have called it as BPO-I-006P, where we are going to assess the learner's voice clarity, his accent, his fluency, his grammar, his pronunciation, his intonation, his paraphrasing. Because since we are talking about BPO industry, obviously our clients are foreign clients, and we have to speak to them in the language, English language, which is the commonly spoken language all over the world. So there are different kind of accents which are used, so we have to come very close to that. So all that we are trying to give you an understanding when we are talking about this verbal exam. And we will be discussing that in the later, that there is a audio also which is given to you, where you have to this audio is related to the self-learning material, where after each unit there is a script which you have to speak. The audio CD is there. You have to speak after what the anchor or the teacher is trying to say, so that this will help you in improving your, or enhancing your pronunciation, your grammar, your fluency, and so on and so forth. Now, the last course under this Diploma in BPO Finance and Accounting program under semester 2, or we can say the course under Certificate in Communication and IT Skills, is BPOI-007, which is IT Skills. So, learners, this is of course a computer-based course where again it has been divided into 7 blocks. The first block talks about introduction to computers, where we will be giving you what is introduction to PC, what do you mean by storage organization, what are the input output devices, what is software. Then we will be introducing you to the database management system. Block 2 is on software security and antivirus. We know that today, we have lot many security threats, as far as your mobile is concerned, or your, computer is concerned, your desktop is concerned. So this particular block 2 on software security and antivirus discusses on what are the different information security concerns which we can come across, what are the software vulnerabilities, and the network security and authentication. The block 3 is on web-based technologies, where we are going to give you an insight about internet, what is the concept of web browsers, and what we can do using internet. Block 4 is of course introduction to MS Office, where we will be discussing about MS Word and MS PowerPoint. Block 5 is MS Excel, where we will be explaining you how you have to work on the worksheets, what is formatting and editing, what do you mean by formulas and functions, how can you apply them in your daily life, what do you mean by sorting and filtering, and finally file handling.
Block 6 talks about Advanced MS Excel and Basics of MS Excel. Here we are again going to talk about working with multiple sheets and workbooks, working with tables and charts, protecting and printing worksheets, basics of MS Excel. Now here again, learners, you can see that there is block 7, which is a practical component. Both courses under semester 2, whether it is English course or IT course, it has a theory as well as a practical component. Here we are going to assess you on, your MS Word, on your MS PowerPoint, on your MS Excel and your MS Excel Access. Now, some general information related to these programs. Of course, eligibility of admission is 10+2 or is equivalent with English as a compulsory subject, because we are talking about BPO organizations. We have to be well versed in the language of English. So at least we must have learned English till class 12. Then exit option. So we've already mentioned, learners, that after semester 1, this is available only for working professionals. All those people who are already working in the BPO industry or any kind of an industry, they can exit out of semester 1, and in that case they will get a certificate in BPO Finance and Accounting. Duration of the diploma program, that is the diploma in BPO Finance and Accounting, is 1 year minimum and maximum 3 years. Duration of the certificate program, which is certificate in communication IT skills, the minimum time is 6 months and the maximum time to complete this program is 2 years. Medium of instruction is English. Admissions in both the programs take place both in the January and July sessions. For the fees related aspects, you can please visit the IGNOU website when you're applying online. Re-registration. This is very important, learners. For diploma students who are taking admission in the diploma in BPO Finance and Accounting program, we can see that it is divided into 2 semesters, semester 1 and semester 2. So once you register in semester 1, maybe after 1 or 2 months, you will get a message from the SRD division, the students registration division, that you have to re-register for it under semester 2, because if you do not re-register under semester 2, you will not get a diploma. These are the different kind of learner support activities. Self-learning material is there, and audio is there, which I just told you. It is we are going to give you along with your English material. The counseling sessions will be held at study centers through Google Meet or through Zoom. Then there is going to be a counseling session through Gyan Darshan, like this is happening right now, through interactive radio counseling sessions. Then there is eGyan Coach, which is a repository of the IGNOU study material, and the program guide and the soft material for the entire program, that is diploma in BPO Finance and Accounting. The entire study material is uploaded there. So students who have opted for soft version of the study material, they will get a rebate of 15%, and they can download the study material from this particular portal. And those who have opted for hard copy of the material, they will be getting the hard copy. Then there is IGNOU eContent app. This is a mobile app again on which you can access the study material of IGNOU. The evaluation system which is followed in IGNOU is a multi-tier system. There is self-assessment exercise which is inbuilt in the SLM. After each unit, you can see there is a check your thing. Then there is continuous evaluation in the form of assignments. Then there is term and examination. There is verbal examination. There is term and practical examination for English course as well as for your IT courses. To claim a diploma or a certificate, you need to get at least 40% mark in each of the components. So the weightage, I can say, for the first 5 courses under semester 1, assignment carries a weightage of 30%, term and examination will carry a weightage of 70%. Coming on to the course on 006, assignment will carry a weightage of 20%, term and examination theory will carry a weightage of 65%, verbal exam will carry a weightage of 15%. And for the 007, this is the IT skills paper, assignment will carry a weightage of 20%, term and examination theory will carry a weightage of 50%, and term and practical examination will carry a weightage of 30%. So I hope, learners, today's session has been very informative, as we have discussed very general things about what this diploma in BPO Finance and Accounting program is all about. In case you have any queries, you can please write to us. My email address is gitikajori@ignou.ac.in. You can also visit the IGNOU website, which is ignou.ac.in. Thank you. Namaskar.
Hello friends, are you interested to pursue MA education program? School of Education, Indira Gandhi National Open University offers a quality MA education program, and this is one of the popular program of IGNOU. This program has awarded as the best master degree program of IGNOU. Let us focus upon the objectives of the program. To enable learners to understand and appreciate knowledge structures and paradigms of education, to make learners understand education as a discipline from different contexts and perspectives, to develop professionals for effective participation in educational actions and discourses in different areas of education, and to create a community of scholars adequately equipped for participation in educational discourses. Friends, MA education program has wider career opportunity and placement. After pursuing MA education program, you can appear UGC NET and JRF in education discipline. You can also pursue PhD in education discipline. After pursuing MA education program, you can be a faculty in the liberal discipline of education, and you can also be a faculty in teacher education institutions with a BEd degree along with your MA education degree. You can also be an educational entrepreneur, and you can also work in different national and international organizations just like Commonwealth of Learning, UNESCO, UNICEF, World Bank, and also different research institutions. The eligibility of the program is a bachelor's degree from any recognized university. This program is of minimum duration of 2 years and maximum duration is of 4 years. Medium of instruction is English. However, the learners can write their assignment, term and examination, dissertation proposal and dissertation report in Hindi language. The program is offered in both the sessions of January and July as per the IGNOU practice. Now let us go through the courses that you have to study in the first year and second year of your program. Both continuous and term and evaluation processes are adopted in MA education program. 30% credit is given to continuous assessment, that is the course-wise assignments, and 70% weightage is given to term and examination that are conducted in the month of June and December every year. So far as dissertation is concerned, dissertation report will be evaluated, and at the same time viva voce examination will be taken for your dissertation course. For further information, you can write to the program coordinators, Professor Nirod Kumar Das. You can also write to me, Dr. Niradhar De. For more detail, you can go through the common prospectus which is uploaded in IGNOU website www.ignou.ac.in. Why wait? Come and join with us and enjoy happy learning.
अज़ीज़ तलबा व तलबात आदाब। आज उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ़ उर्दू अफ़साने में एक मातबर और मशहूर अफ़साना निगार कृष्ण चंद्र की अफ़साना निगारी और उनके एक बहुत ही मशहूर यानी कि उनका शाहकार अफ़साना कालू भंगी का तज्ज़िया करेंगे, उस पर गुफ्तगू करेंगे। मशहूर व मारूफ अफ़साना निगार और अफ़साना के साथ साथ उन्होंने बेशतर बहुत से नावल भी लिखे, यानी कि वो नावल निगार भी थे। कृष्णचंद्र की वलादत 23 नवंबर 1914 को राजस्थान के एक शहर भरतपुर में हुई। उनके वालिद यानी डॉक्टर कृष्णचंद्र के जो वालिद थे, यहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर थे। इनके वालिद का नाम गौरी शंकर चोपड़ा था। उस ज़माने में यानी कि 1914 के ज़माने में मेडिकल ऑफिसर होना एक हिंदुस्तानी के लिए बड़े फ़ख्र की बात थी। भरतपुर रियासत से इनका तबादला पुंछ यानी कि जम्मू कश्मीर की एक रियासत पुंछ में हो गया और इनको वहाँ जाना पड़ा। कृष्णचंद्र की इब्तदाई तालीम और इनका बचपन पुंछ में ही गुजरा, यानी कि वहाँ पुंछ में एक तहसील है महंदगढ़, वहाँ पर इनकी इब्तदाई तालीम हुई। और ये यानी डॉक्टर कृष्णचंद्र वहाँ के मनाजिर, वादिया, पहाड़, कुदरती मनाजिर से इतने मुतासिर हुए कि इनके बेशतर नावलों और इनके अफसानों में वहाँ के कुदरती मनाजिर को दिखाया गया है, पेश किया गया है। इब्तदाई तालीम घर पर यानी कि अपने इलाके में उस खित्ते में हुई और आगे की तालीम के लिए ये लाहौर गए। लाहौर में इन्होंने तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर इनकी मुलाकात उस वक्त के मुहब्ब वतन, आज़ादी के दीवाने सरदार भगत सिंह के कुछ साथियों से हुई और इन्होंने उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया और उनके साथ कुछ वक्त भी गुजारना शुरू किया। इसका नतीजा ये होता है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 2 महीने तकरीबन इनको जेल में रहना पड़ा। बाहर आने के बाद इनके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा तो पैदा हो गया, लेकिन उस एग्ज़ाम में, उस इम्तिहान में ये फ़ेल हो गए। फ़ेल होने के डर से ये कलकत्ता चले गए और घर पर बिना बताए, यानी कि जब इनको ये मालूम हुआ किसी ज़राए से कि इनकी वालदा उनके घर से चले जाने के गम में बीमार है, तो ये घर वापस आ गए और दोबारा फिर तालीम की शुरुआत की। LLB किया लाहौर से और बतौर वकील ये पेशा उनको रास नहीं आया और इन्होंने इस पेशे LLB तो किया, लेकिन वकालत में इनका दिल नहीं लगा, चूँकि इनके अंदर एक मुसन्निफ़ छिपा हुआ था और अपने इस हुनर को इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उजागर करना यानी कि बाहर निकालना शुरू किया और इन्होंने उस वक्त के कुछ रसायल में लिखना शुरू किया और यानी कि उस दौर का एक बहुत ही मारूफ और मशहूर रिसाला था हुमायूं। हुमायूं में इन्होंने एक इनका अफसाना जो था वो छपा
अफसाने का नाम है तिलिस्म ख्याल। ये 1939 की बात है और उसी दौर में इनका अफसाना नज़ारे और नगमे की मौत भी शाये होता है। पहला नावल यानी कि किशंदर का पहला नावल 1943 में मंजर आम पर आता है और इस नावल का नाम है शिकस्त। ये उस दौर के हालात, क्योंकि ये दौर वो था कि जब आज़ादी की लड़ाई यानी कि हिंदी में इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा, ये पूरे शबाब पर था, उरूज पर था। गांधी जी ने कई तहरीकात चला रखी थी, सरदार भगत सिंह और दीगर आज़ादी के दीवाने अपने अपने खित्तों में मुल्क की आज़ादी के लिए अपने अपने तौर पर काम कर रहे थे। किशचंदर भी इससे अछूते नहीं रहे और उनकी ये एक कसक उनके अफसानों, उनके नावलों में हमें देखने को मिलती है। किशचंदर चूँकि बुनियादी तौर पर रोमानवी अफसाना निगार है और उस दौर में यानी कि जब तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ तो उसकी पहली जो मीटिंग इनकी, उसका पहला इजलास, उसकी पहला जलसा लखनऊ में हुआ और उसकी सदारत भी यानी कि उस जलसे की सदारत भी उर्दू के पहले अफसाना निगार प्रेमचंद ने की। 36 का वाक़या है। और उसके 2 साल बाद कलकत्ता में ये अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में किशचंदर ने बाकायदा तौर पर सूबाई पंजाब की नुमाइंदगी की, यानी कि वो सूबा पंजाब के नुमाइंदे के तौर पर कलकत्ता की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। और 1946 में ये चूँकि कश्मीर से ये बम्बई पहुँचे और 1946 में इन्होंने बम्बई में कुछ रिसालों में लिखना शुरू किया, कुछ फिल्मों के लिए मकालमे लिखे और स्क्रिप्ट लिखी। लेकिन इनको इनके एक अफसाने को देखकर एक प्रोड्यूसर ने इनको पूना में मदऊ किया, यानी कि पूना में बुलाया और अपनी फिल्म कंपनी में इनको मुलाजमत दी। ये दौर वो है कि उस वक्त हिंदुस्तानी सिनेमा अपने इब्तदाई मरहले में था। लोग इनके बाइज्जत घरानों के, अच्छे घरानों के अफराद इस तरफ जाना नहीं चाहते थे। और किशचंदर चूँकि उस सरजमीन से आए थे जम्मू कश्मीर की, और वहाँ के मनाजिर उनके नावलों, उनके अफसानों में शुमार थे। इसके साथ साथ इनके जम्मू कश्मीर के डल झील, निशात बाग, शालीमार बाग, इनका ज़िक्र मिलता है। उनकी खूबसूरती, उन मनाजिर को उन्होंने उसमें पेश किया। तो मुंबईया फिल्में, वहाँ के डायरेक्टर्स उनके इन अफसानों और नावलों से इतने मुतासिर हुए कि उस पर फिल्में बनाने तक की बात कह डाली और ये सिलसिला शुरू भी हुआ। पूना में रहते हुए किशचंदर ने, यानी कि पूना की जो ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी में ऐश और इशरत और मौज मस्ती की ज़िंदगी है। और पूना में रहते हुए भी उनका तख्लीकी जो हुनर है, जो तख्लीकी काम है, वो जारी रहता है। और उन्होंने पूना में रहते हुए अन्नदाता और एक और ऐसा अफसाना जो
हिंदुस्तानी अनासिर की नुमाइंदगी करता है वो लिखा, अंदाता कहत बंगाल को लेकर के लिखा। और ये दूसरा अफसाना मोरी है और ये शाये हुआ उसी साल ये शाये होता है। इनके अदबी खिदमात को देखते हुए, यानी कि किशचंद्र की अदबी खिदमत को देखते हुए इनको हुकूमत हिंद ने पद्म भूषण से नवाजा, बहुत सारे इनामात इनको दिए गए। और इन पर इन्होंने चूँकि फिल्में बॉलीवुड में रहते हुए इन्होंने फिल्में बनाई। इनकी जो पहली फिल्म यानी किशचंद्र की जो पहली फिल्म है वो है सराय के बाहर। सराय के बाहर इनकी फिल्म है जो इन्होंने अपने ही ड्रामे की बुनियाद पर उसको बेस मानकर इन्होंने उसका बनाया। किशचंद्र ने तकरीबन 2 दर्जन यानी कि 24 के लगभग इन्होंने फिल्मों में काम किया, फिल्में बनाई, जिनमें से कुछ चली और कुछ नहीं भी चली, यानी कि कुछ फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। और इन्होंने बेशतर फिल्मों में मकालमे लिखे और मंजरनामे लिखे। इनके इस हुनर को बॉलीवुड में बहुत सराहा गया। और चूँकि किशचंद्र अपने अहद के दीगर अफसाना निगारों से कुछ हटकर थे, मुख्तलिफ थे। जैसे उस दौर को रोमानवी दौर भी कहते हैं, अफसानों में रोमानवी, लेकिन इन्होंने रोमानवी दौर को उस वक्त के हकीकत के जो मौज़ूआत है उनमें तब्दील किया। जैसे बम्बई में रहते हुए इनका महालक्ष्मी का फूल एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा अफसाना है और उर्दू अफसाने में वो भी एक शाहकार अफसाने की हैसियत रखता है। मुंबई इस अफसाने में यानी कि महालक्ष्मी के पुल में किशचंद्र ने रेलवे लाइन के किनारे बनाई गई झुग्गियों में रहने वाले उस मजदूर और निचले तबके के किरदारों को बेहद खूबसूरती के साथ में उन्होंने किरदार बनाकर पेश किया है। 5 साड़ियों का जिक्र है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इनके अफसानों और नॉवेलों में कश्मीर की खूबसूरती, पंजाब का देहात और महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के अवामी मसाइल को इन्होंने एक हुनरमंदी के साथ में एक कह सकते हैं कि एक बेहद होशियार मुसन्निफ की हैसियत से इन्होंने, एक अफसाना निगार की हैसियत से इन्होंने उसको मौजू बनाया और उसको पेश किया। जब उर्दू अदब में लोग हुस्न व इश्क, रोमानियत से बाहर कदम नहीं रखते थे, उस वक्त किशचंद्र ने ऐसे तबकात को पेश किया जिसकी तरफ देखना तो दूर, छूना भी मतलब उनको छू कर जैसे समझते हैं कि हम अपवित्र हो गए, नापाक हो गए, ऐसे तबकात को उन्होंने अपने अफसानों में किरदार के तौर पर बरता। आज जिस अफसाने पर गुफ्तगू की जाएगी यानी कि कालू भंगी नाम से ही है, आज के दौर में हमारी हुकूमत ने यानी कि जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज होता है, लागू होता है, तो इस लफ्ज़ को उसमें उस पर पाबंदी लगा दी गई, यानी कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चूँकि ये अफसाना किशचंद्र का आज़ादी से काबिल का लिखा हुआ है और किशचंद्र ने इस अफसाने में उस समाज को, उस बिरादरी को, उस जात को, यानी कालू नाम है और भंगी उसकी ज़ात है, उसको पेश किया है, उसको मरकज़ी किरदार के तौर पर इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है, बरता है। क्योंकि ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर तबकाती जो रस्म व रिवाज है उनको तवज्जो दी जाती है, यानी कि तबके को, ज़ात को अहमियत दी जाती है।
अब चूँकि उस दौर में दूसरे भी अफसाने लिखे जा रहे थे, असमत चुगताई के कुरतुल एन हैदर और दूसरे ऐसे बहुत से कई अफसाना निगार थे जो अपने अपने ख़ित्ते, अपने अपने मसाइल या तबक़ाती जो वो है अफसाने लिख रहे थे, तबक़ाती जो मसाइल हैं उनको पेश कर रहे थे। चूँकि कालू भंगी के वालिद यानी कि उनके पिताजी, उनके फादर पेशे से डॉक्टर है और उनके अस्पताल में कई मुलाजिम हैं, कंपाउंडर है, चपरासी है, और उन्हीं मुलाजिम में एक कालू भंगी हैं जो अस्पताल की गलाजत, बूलो वराज यानी कि गंदगी को साफ करता है और उसका जो दिमागी है, उनके दिमाग जो है उसका अपने आप में इस तरफ वो माइल हो गया कि वो सोचता है कि मैं इस बिरादरी से हूँ, ज़ात से हूँ जिसको लोग छूना तो दूर की बात, देखना भी पसंद नहीं करते। यानी कि उसका जो दिमागी इस्तेसाल किया जाता है। किशचंदर ने उस समाज के, उस बिरादरी के जो मसाइल है, यानी कि वो अपने इस अफसाने के ज़रिए मंजर आम पर लाने की कोशिश की है और समाज को ये बताया है कि जब तक ज़ात बिरादरी को नहीं तोड़ोगे तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। अफसाने के इब्तदा में, यानी कि कालू भंगी जो अफसाना है, इसके इब्तदा में, इसकी शुरुआत में मुसन्निफ़ यानी कि ख़ुद राइटर, अफसाना निगार इसमें एक किरदार के तौर पर है। और चूँकि किशचंदर खुद अफसाने लिख रहे हैं, एक दिन नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार कालू भंगी कृष्णचंद्र से कहता है कि छोटे साहब, आप बहुत सारी कहानियाँ लिखते हैं, आप मेरे बारे में भी कुछ लिखो ना, यानी कि मुझ पर भी एक कहानी लिखो ना। और अफसाना निगार उसको यूं ही टाल देता है, यानी कि उसकी बात को अनदेखी कर देता है, गौर नहीं करता। और हस्बे मामूल यानी कि उसके जो काम है कालू भंगी का, वो उस काम से फारिग हो करके कुछ लम्हात के लिए जब उसको वक्त मिलता है, वो किशचंदर यानी अफसाना निगार के सामने जाकर जब भी उसको वक्त मिलता है वो उसको यही कहता है कि छोटे सरकार, आप बहुत सारी कहानियाँ लिखते हैं और आपकी कहानी, कितनी कहानी अब तक आप लिख चुके हैं? तो अफसाना निगार कहता है कि 60 और 2 62। अब 62 कहानी लिख चुके हैं, तो छोटे साहब मेरे मुतालिक कब लिखोगे, मेरे बारे में कब लिखोगे? अब अफसाना निगार उसको ये कहकर नज़रअंदाज कर देता है, टाल देता है कि ये उस समाज से आता है, यानी कि भंगी समाज से ये आता है, इसके मुतालिक क्या लिखा जा सकता है, और वो अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाता है। लेकिन कालू भंगी की मौत के कई साल बाद, यानी कि जब भी अफसाना निगार कुछ लिखने बैठता है तो उसके जहन में, उसकी आंखों के सामने कालू भंगी का अक्स यानी कालू भंगी आन खड़ा होता है और बार बार यही सवाल करता है कि छोटे साहब, मुझ में ऐसी क्या कमी है, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है कि आप मेरे बारे में नहीं लिख सकते? तब एक दिन अफसाना निगार इरादा करके कालू भंगी के मुतालिक कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन
बात यहाँ पर आनकर अटक जाती है कि वो कालू भंगी से ये यानी कि पहले उसने कई बार मर्तबा सवाल किए होते हैं कि कालू भंगी तुम्हारी तनख्वाह कितनी मिलती है, तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है। तो कालू भंगी इसके मुतालिक कहता है, यानी कि अपनी तनख्वाह का जिक्र करते हुए कहता है कि छोटे साहब मुझे 8 रुपये तनख्वाह मिलती है। अब बताइए, अफसाना निगार सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहता है कि 15 रुपये चपरासी को मिलते हैं, 25 रुपये कंपाउंडर को मिलते हैं। अगर इसकी तनख्वाह 25 रुपये भी होती तो कुछ लिखा जा सकता था, और 8 रुपये में कहाँ अफसाना लिखा जाएगा। यानी कि जिसकी तनख्वाह 8 रुपये हो, क्या उस पर कुछ लिखा जा सकता है। फिर गौर व फिक्र करने लगता है और उससे दीगर सवाल करता है। ये कहता है कि कालू भंगी तुम ये बताओ, तुम्हारी शादी हुई है। तो कालू भंगी कहता है कि छोटे सरकार, मैं भंगी बिरादरी से हूँ और यहाँ मैं अकेला हूँ, मेरी बिरादरी से कोई दूसरा ख़ानदान, दूसरे लोग यहाँ नहीं रहते। तो भला मुझसे कौन शादी करेगा। ये भी यहाँ पर भी अफसाना निगार ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक भंगी समाज के, भंगी बिरादरी के एक इंसान से कोई शादी नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ भी उसकी शादी के मामले में उसकी ज़ात आड़े आती है और कुछ लम्हात के लिए अफसाना निगार अपने इस इरादे को छोड़ देता है। तो ये लेक्चर जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। Hello viewers, this MA program in Environmental and Occupational Health focuses on the relationship between people and their environment and fosters safe and healthy communities, and this is of utmost importance. This program is an MA in Environmental and Occupational Health. The type of the program is a master's program and the medium of instruction will be in English. The duration of the program will be a minimum of 2 years and a maximum of 4 years. The target group will be a graduation from any discipline. Mainly the professionals working in environmental and occupational sector and non-governmental organizations are welcome to join. Doctors, nurses, paramedical graduates and employees can join the course. Employees from the Central Pollution Control Board, civil servants of the state and central governments, faculty, researchers and students in universities, research organizations and colleges will find this program very interesting. Graduates aspiring to pursue a career in environmental management, occupational health and safety, industrial health and safety will also find this program of useful relevance. The job opportunities for this program is tremendous. They can work as environmental health and safety specialist, occupational health and safety specialist in various organizations, HSE coordinator and protection officers. They can also work as worksite wellness coordinators, public administration and safety professionals. They can also work as industrial hygienists and ergonomists in the various organizations.
Then the safety and environmental health managers, toxicologists, health and safety engineering specializations are also very important. The objectives of this program include the following. They will discuss the impact of the environmental hazards on human health. Then they will describe the policies, laws, standards and the measurement techniques and applications in different occupational. अजीज़ तलबा व तलबात और सामाईन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बात चल रही है कालू भंगी अफसाने का तज़िया। ये अफसाना, इसके अफसाना निगार कृष्ण चंद्र है और बार बार कालू भंगी उसके जहन में, उसके सामने आके खड़ा हो जाता है कि मेरे मुतालिक कब लिखोगे। लेकिन अफसाना निगार हर बार उसको ये सोचकर खारिज कर देता है कि 8 रुपये के मुतालिक क्या लिखा जा सकता है। एक बार खुद अफसाना निगार ने उससे पूछा कि कालू भंगी, तुम 8 रुपये कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे खर्च करते हो? तो कालू भंगी ने इसका जवाब दिया कि 4 रुपये का आटा लाता हूँ छोटे सरकार, 1 रुपये का नमक, 1 रुपये का तंबाकू, 8 आने की चाय, 4 आने का गुड़, 4 आने का मसाला और 1 रुपया बनिए के पास जमा करता हूँ, उससे कुछ उधार ले रखा है। और छोटे साहब, कम से कम साल भर में एक जोड़ी तो कपड़े बस सिलवाने पड़ते हैं, तो पूरे 8 रुपये हर महीने खर्च हो जाते हैं। और अगर बड़े साहब, देखिए यहाँ एक इल्तिजा, गुजारिश कर रहा है कालू भंगी, कहता है कि छोटे साहब, अगर आप बड़े साहब से कह कर के मेरी तनख्वाह 1 रुपया और बढ़ा दी जाए, यानी कि अपनी तनख्वाह में 1 रुपये का इजाफा चाहता है, और उसके मुतालिक भी बात करता है कि छोटे साहब, मैंने आज तक पराठे नहीं खाए। कालू भंगी का दर्द देखिए, इस सोचने पर मजबूर कर देता है। कहता है, छोटे साहब, मैंने आज तक पराठे नहीं खाए, मैं मक्का के पराठे पे घी लगा के खाना चाहता हूँ। ये उस वक्त हमारे मुल्क की हालत रही होगी कि चंद्र ने हकीकत को सामने लाने की कोशिश की है। और फिर अफसाना निगार का ये हुनर, उसका एक अफसाने को के किरदार का इंतखाब और उन किरदारों के मुंह से ज़बान का इस्तेमाल, यानी कि उसी के मुताबिक ज़बान का इस्तेमाल कराया है। कालू भंगी कहता है कि छोटे साहब, मैंने आज तक पराठे नहीं खाए, मक्का का पराठा घी लगा के खाऊं तो मज़ा आ जाए। चूँकि अफसाना निगार जानता है कि कालू भंगी तालीम याफ्ता नहीं है, इसलिए वो मज़ा नहीं कहेगा, मज़ा कहेगा कि मज़ा आ जाए। तो यहाँ अफसाना निगार ने किरदारों के मुंह से उसी की ज़बान को कहलवाने की कोशिश की है। अब अफसाना निगार उसके मुतालिक हिम्मत करके
और इरादा करके लिखना शुरू करता है। तो यहाँ इस अफसाने में मरकज़ी किरदार कालू भंगी ही है। इसमें कई दूसरे किरदार भी हैं, जैसे कंपाउंडर, डॉक्टर, चपरासी। डॉक्टर आला तबका और कंपाउंडर और चपरासी दरमियानी तबका और कालू भंगी निचला तबका, यानी कि 3 तबकात को अफसाना निगार ने पेश करने की कोशिश की है। लेकिन मरकज़ी किरदार कालू भंगी ही है। उसकी कहानी इस तरह शुरू होती है कि घुटनों से ऊपर एक फटी और मैली लंगोटी पहने रहता है और बदन पर कभी कपड़ा होता है, कभी नहीं। रोज़ के यानी कि रोज़मर्रा की उसकी ज़िंदगी यह है कि पहले अस्पताल का बूल अबराज, गलाजत, गंदगी साफ़ करता है, उसके बाद कंपाउंडर के, डॉक्टर के घर की सफाई, उसके बाद कंपाउंडर के घर की सफाई, और जो वक्त बचता है दोपहर के बाद का, उसमें वो डॉक्टर साहब की गाय और कंपाउंडर की बकरी को चराने ले जाता है। चूँकि कालू भंगी से कोई बोलता नहीं, उससे कोई राब्ता नहीं रखता, बोलना पसंद नहीं करता, उसे छूना पसंद नहीं करता, इसलिए वो अपने ही में मस्त रहना पसंद करता है। और परिंदों, गाय यानी कि जानवरों की ज़बान शायद उसको बखूबी वो समझ लेता है और जानवर उसके इशारे या उसकी ज़बान को समझ लेते हैं। इसीलिए अफसाना निगार ने यहाँ कहा है कि बस्ती से दूर खाली खेतों में जब वो बकरी और गाय चराने जाता है तो वो मानो उसके इशारे पर काम करती है, चलती है। अगर बकरी चलते चलते किसी खेत में मुंह मारती है, यानी कुछ खाने की कोशिश करती है, और वो उसको आवाज़ देकर बुलाता है तो वो फ़ौरन उसकी तरफ चली आती है। और खाली खेत में यानी कि खेत की मेंढ पर वो सर रख कर लेट जाता है। उसकी गंजी चंदिया यानी कि उसके सर के जब बाल उड़े हुए हैं उसको गाय चाटती है, उसको बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर अफसाना निगार ने बकरी के मुताल्लिक कहा है कि गाय एक वफादार जानवर होता है, और बकरी के मुताल्लिक कहना चाहता है, कहा है कि बकरी एक बेवफा जानवर है, औरत से भी ज़्यादा बेवफा। तो यहाँ अफसाना निगार ने औरत से ज़्यादा बेवफा कहा है। अगर ये गनीमत रही उस वक्त की कि कोई ख़वातीन तंजीम नहीं थी, नहीं तो मंटो, सादत हसन मंटो की तरह आज के दौर में अगर इस तरह का जुमला अफसाना निगार इस्तेमाल करता तो उस पर भी शायद मुकदमात कायम हो जाते। लेकिन चूँकि अफसाना निगार उन जानवरों की ज़बान समझता है और शाम को उन्हें ला कर के उनके बाड़े में जहाँ उनके बांधने की जगह है वहाँ उनको बांध देता है, और सुबह उनको पानी और चारा रात में। ये अफसाना निगार ने कालू भंगी के ज़िम्मे दिखाने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ एक लंगड़ा कुत्ता है जो बहुत मतलबी है और सिर्फ कालू भंगी के पास रोटी खाने की गर्ज से आता है, रोटी खाता है और भाग जाता है। लेकिन कालू भंगी की हमदर्दी देखिए कि दीगर दूसरे कुत्ते जब उसको चोट पहुंचाते हैं, ज़ख्म पहुंचाते हैं, उसको काटते हैं, तो उसके घाव पर दवाई लगाना, मरहम पट्टी करना और उस कुत्ते की देखरेख करना, ये कालू भंगी के एक दयालु होने का, रहमदिल होने का ये सबूत है। इस अफसाने में दूसरे किरदार यानी कि जो कंपाउंडर है
कंपाउंडर को अफसाना निगार ने एक बिल्कुल आशिकाना मिजाज के तौर पर पेश किया है। यानी डॉक्टर के अस्पताल में जब बेशतर मरीज़ आते हैं तो यहाँ कंपाउंडर जो ख़ातून मरीज़ा आती है उसको उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है और कई मरीज़ा से उसके इश्क भी लड़ता है, इश्क लड़ाता है और कईयों से उसको बेवफाई मिलती है। एक जैसे इस अफसाने में एक मरीज़ा आती है जो उसके बच्चे को कंपाउंडर खिलाता है, उससे नज़दीकी बनाता है, लेकिन जब वो ठीक होकर अच्छी सेहतमंद होकर के जाती है तब वो उसको दूर ही से देखकर मायूसी में मुब्तला हो जाता है। इन सब बातों में यानी कि यहाँ पर चपरासी भी कम नहीं है, चपरासी भी हल्का फुल्का कंपाउंडर के नक्शे कदम पर चलता है। चूँकि यहाँ मैंने अभी जिक्र किया कि तनख्वाह 25 रुपये, 15 रुपये और 8 रुपये, यानी कंपाउंडर अपनी तनख्वाह और चपरासी अपनी तनख्वाह को, यानी कि उससे कंपाउंडर की तनख्वाह ज़्यादा है, कंपाउंडर की उससे कम है, तो वो कालू भंगी की बनिस्बत उनको ज़्यादा आमदनी है, यानी कि उनकी तनख्वाह ज़्यादा है, इसलिए वो उनका कदम उस तरफ उठता है। कालू भंगी मायूस इसलिए रहता है कि वो सबसे पहले अपनी ज़ात, अपनी बिरादरी को जहन में रखता है कि मैं किसी से इश्क लड़ाना तो दूर, इस बारे में सोच भी नहीं सकता। और अफसाना निगार उससे कई मर्तबा ये सवाल करता है कि तुमने कभी किसी से इश्क किया है, शादी क्या होती है, शादी के बारे में पूछता है। तो कालू भंगी बिल्कुल एक इस अंदाज में उसको जवाब देता है कि जैसे वो इन सब चीज़ों से ना वाकिफ़ हो। बोला जी शादी, बोला मुझसे शादी कौन करेगा, यानी कि ये बात को अफसाना निगार ने कई मर्तबा इसको इस अफसाने में पेश करने की कोशिश की है और बार बार आन करके सारी बात कालू भंगी पर टिक जाती है। यहाँ चूँकि कालू भंगी है जो बिल्कुल निचले तबके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन फिर भी अफसाने का हीरो है। उसी के मुतालिक 8 रुपये में बात हो रही है, 8 रुपये का ज़िक्र है उसकी तनख्वाह का। उसके मुतालिक जानवरों, बकरी, कुत्ता और परिंदों, ऐसे वो मोर की आवाज़ निकालता है, बाहर जाता है, उनकी ज़बान समझता है, और जैसे चिड़िया, तोता, इन सब की आवाज़ निकालता है, इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने की कोशिश करता है। और उसका हुलिया यानी कि उसका स्ट्रक्चर, यानी कि उसके हुलिये के बारे में ज़िक्र करता है कि उसके दांतों के किस अंदर, यानी कि अफसाना निगार ने यहाँ उसके दांतों के बीच में छीद, चौड़े नथुने, गंजा सर और उसके पैरों में बीवाई फटी हुई, उसका हुलिये से ही उसको उसने जाहिर करने की कोशिश की है अफसाना निगार ने कि उस वक्त मुल्क में इस समाज के लोगों का हुलिया कैसा था, वो किन हालात में रहते थे, कैसा लिबास पहनते थे, तालीम से कोसों दूर थे, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं करते थे। तो इन सब बातों को अफसाना निगार ने बहुत खूबी के, बहुत अच्छी हुनरमंदी कही है। अफसाने का एक हुनर है कि उसके साथ इन्होंने इस अफसाने में यानी कि कालू भंगी में पेश किया है। ये अफसाना यानी कि कालू भंगी ये किशचंद्र का एक अफसानवी मजमुआ, जिसका नाम, जो इस मजमुए का नाम है हुस्न और हैवान, ये 1947 में शाये हुआ। और शाये भी कहाँ से, यानी कि पब्लिश हुआ, ये बम्बई के
इनके शोबा उर्दू जो नेशनल इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशंस ये लिमिटेड मुंबई में एक उस वक्त इदारा हुआ करता था, ये उस इदारे से ये अफसानी मजमुआ यानी कि हुस्न और हैवान में ये शाये होता है। उस अफसाने में कुल यानी कि टोटल 10 अफसाने होते हैं और उसका आखिरी अफसाना ही कालूभंगी है। यानी कि यहाँ पर हम इसको यूँ कह सकते हैं कि जैसे समाज के बिल्कुल आखिरी पायदान पर बिल्कुल निचला तबके के किरदार को हीरो बना दिया है, यानी कि अफसाना निगार ने, किशनदर ने, वैसे ही इस अफसानवी मजमुए के आखिरी अफसाने का नाम भी कालूभंगी रखा है। ये उस वक्त के हमारे तालीमी निज़ाम, बिरादरी, ज़ात बिरादरी, उस वक्त के हिंदुस्तान के सियासी, समाजी, इक्तिसादी और दीगर जो निज़ाम बनाए हुए थे, उन निज़ाम को अफसाना निगार पेश करता है। यहाँ एक आला तबके यानी कि जो आला तबके के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, लड़के हैं, उनको यानी कि उस वक्त आशिकी में मुब्तला हो करके मतलब एक खातून से इश्क लड़ाते हैं और वो खातून दो लड़कों को एक साथ, दो लड़कों से इश्क लड़ाती है और दोनों को इस झांसे में रखना कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन जब इसका खुलासा होता है तो उनमें पटवारी का लड़का उस पर हमला कर देता है, जानलेवा, और उसको ज़ख्मी कर देता है उस खातून को, और वो इलाज कराने उसी अस्पताल में आती है जहाँ कालूभंगी गलाजत उठाता है, सफाई का काम करता है और एक तवील अरसे तक उसके ज़ख्म धोना, उसकी पट्टी यानी कि मवाद खून से लथपथ यानी कि खून से लबरेज पट्टियों को धोने का काम कालूभंगी करता है। आहिस्ता आहिस्ता कंपाउंडर उससे मोहब्बत करने लगता है, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया है कि इस अफसाने में तनख्वाह के एतबार से अफसाना निगार ने उनके किरदार को पेश किया है। कालूभंगी इस तरफ सोचता भी नहीं, अपने काम से काम रखता है। गलाजत उठाना और बलगम वगैरह साफ़ करना, उनके कमरे की, रूम की, उनके जहाँ पर मरीज एडमिट होते हैं, दाखिल होते हैं, उस जगह की सफाई करके और अपने काम पर निकल जाना। अफसाना निगार ने यहाँ, जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि कश्मीर के मनाजिर को इसमें पेश किया है, तो उन्हीं मनाजिर को, कश्मीर ही के मनाजिर को मरकज़ में रख कर के उसी को इन्होंने इसमें पेश किया है। अब चूँकि उस वक्त के कश्मीर में ये निज़ाम था कि इस समाज यानी कि भंगी समाज के इंसान सिर्फ़ और सिर्फ सफाई तक महदूद रहेंगे, गलाजत उठाने तक महदूद रहेंगे। तो ये वहाँ के निज़ाम के मुतालिक किशनदर ने इसको दिखाने की कोशिश की है, मंजर आम पर लाने की कोशिश की है, इसको पेश करने की कोशिश की है। और उस वक्त चूँकि आज़ादी से कब्ल लिखा गया अफसाना है, उस वक्त अंग्रेज़ हुक्मरान को इससे एक मैसेज, एक पैगाम देने की कोशिश की है कि ज़ात बिरादरी के निज़ाम को किस तरह तोड़ा जा सकता है। अगर कोई अपने समाज का, अपने बिरादरी का कोई अकेला फ़र्द है, इंसान है, तो क्या उससे कोई शादी नहीं करेगा? और इसके बावजूद कि वो निचले तबके से ताल्लुक़ रखता है, क्या उससे कोई शादी नहीं करेगा? उसको कोई हमदर्दी नहीं जताएगा? उसके दुख दर्द में काम नहीं आएगा? इन सब सवालों को ला करके खड़ा कर देता है। जबकि ममालिक गैर
यानी कि मगरिब में ये निज़ाम नहीं है। तो यहाँ चूँकि अंग्रेज़ी अहद में लिखा गया अफसाना है और उनके यहाँ ज़ात बिरादरी का कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाया गया है, वो इंसानियत को तवज्जो देते हैं उस वक्त के हिंदुस्तान, और यहाँ तक कि आज के दौर में भी हिंदुस्तान इससे अछूता नहीं है। और कहीं कहीं आज के यानी कि तरक्की याफ्ता दौर 21वीं सदी में भी इस तरह के वाक़यात हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उस दौर के मुकाबले में कुछ कमी ज़रूर आई है। तो अफसाना निगार इस तरफ कलम उठाता है और उस तरफ तवज्जो करता है जिस तरफ कोई लिखना भी नहीं चाहता, उस तरफ देखना भी नहीं चाहता। चूँकि इससे कब्ल यानी कि किशचंद्र से कब्ल इस तरफ उर्दू के पहले अफसाना निगार प्रेमचंद्र ने कलम उठा, प्रेमचंद्र ने इस तरफ लिखा। उनके बहुत से अफसाने ऐसे हैं जो दलित मसाइल को पेश करते, दलितों के। जैसे उनका एक अफसाना कफन है, कफन में उन्होंने ऐसे ही एक जिसको चमारों का ख़ानदान है यहीं से शुरू करते हैं। तो ये शुरुआत तो प्रेमचंद ही के दौर से हो गई थी, लेकिन इस तरह का यानी कि कालू भंगी और उसके पेशे से जोड़कर और उसके उस कुंवारा यानी कि उसके कोई शादी ना करना और उसको ऐसे के वो अपने आप में इतना कमतर समझता है कि इस तरफ उसका जहन ही नहीं जाता। तो इन सब मसाइलों को अफसाने उर्दू अफसानों में पेश किया गया है और उर्दू के चंद अफसाना निगार ऐसे हैं जिन्होंने इस तरफ कलम उठाया है, और जिस भी अफसाना निगार ने इस तरफ कलम उठाया है वो अफसाना उसका शाहकार अफसानों में शुमार हुआ है। प्रेमचंद का कफन, किशचंद्र का कालू भंगी और दूसरे कई अफसाने ऐसे हैं, जैसे मंटो का सादत हसन मंटो का एक अफसाना जो जिसमें भंगन का है, उनका उसका उन्वान भंगन है, वो अफसाना भी उम्दा अफसाना है। तो जिसने इन मसाइल को समाज के निचले तबकात की ज़िंदगी को, उनके रस्म व रिवाज, उनके मसाइल को पेश करने की कोशिश की, उनको अपने अफसानों में किरदार के तौर पर पेश किया, उन अफसानों ने उस अफसाना निगार को इतना मशहूर और मारूफ बना दिया कि उसकी शनाख्त उन अफसानों की बदौलत होने लगी। किशचंद्र ने जब किरदारों का इंतखाब जो है ना ये बहुत समझदारी के साथ किया, और यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि उनके अफसानों के तराजिम यानी कि तर्जुमे दीगर ज़बानों में भी हुए। 1966 में का वाक़या है कि 1966 में किशचंद्र के जब अफसाने सोवियत ज़बान में उनका तर्जुमा हुआ तो उनको सोवियत नेहरू अवार्ड से नवाजा गया है किशचंद्र को। ये 1966 की बात है। और उनके यानी कि उनकी अदबी खिदमात और उनकी जो फ़िल्मों के लिए उन्होंने 2 दर्जन से ज़्यादा जैसे फ़िल्म में मैंने जिक्र किया उन्होंने में काम किया, बनाई। तो उन पर बॉलीवुड में एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई गई। इस फिल्म में उनके छोटे भाई महेंद्र नाथ जो है वो बतौर हीरो के तौर पर उन्होंने उसमें काम किया। और चूँकि किशचंद्र एक ऐसे कलमकार है जिनको बाद में उनके यानी कि अदब के नाकदीन ने एशिया का बड़ा अफसाना निगार, और तो कई नाकदीन ने तो उनको एशिया का सबसे बड़ा अफसाना निगार कहा है। अब ये बात नाकदीन ने कही है और किसी हद तक उर्दू का बड़ा अफसाना निगार ये हम उसको कह सकते हैं कि किशचंद्र ने ऐसे अनछुए मसाइल को
और इनके जो अनछुए टॉपिक, उन मौजूआत को भी, और ऐसे मसाइल जिनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई उन्हें अपने अफसानों का मौजू बनाया। जैसे मैंने अभी कहा था कुछ देर कबल कि अंदाता कहत बंगाल को लेकर के लिखा गया, और चूँकि उन्हें उनके इस खिदमत से, यानी कि उनकी कलमी खिदमत, उनकी यानी कि एज ए फिक्सन निगार, उनके अदबी खिदमत से मुतासिर होकर हिंदुस्तान सरकार ने उनको, यानी कि हुकूमत हिंद ने उनको पद्म विभूषण से नवाजा, और इसके अलावा उनको बहुत सारे दीगर भी बहुत सारे इनामात दिए गए। चूँकि किशनदर दिल के मरीज थे और उनको कई बार हार्ट अटैक आया और वो अस्पताल में दाखिल हुए और अच्छे हो गए। लेकिन 5 मार्च 1977 को उनको दिल का दौरा आया और वो अस्पताल में दाखिल किए गए, और 8 मार्च 1977 को वो इस दुनिया से रुखसत कर गए। उनकी बेशतर नावल हैं, उनके अफसाने हैं जो उर्दू अदब में रहती दुनिया तक, यानी कि अपना एक अलग मकाम रखते हैं, और उनकी अदबी खिदमात से ही मुतासिर होकर के महकमा डाक, यानी कि डाक विभाग में महकमा डाक ने उन पर एक 10 रुपये का डाक टिकट जारी किया। ये 1917 में, ये 2017 में महकमा डाक ने उन पर 10 रुपये का टिकट जारी किया। ये एक उर्दू के अफसाना निगार के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, और अहले उर्दू को भी इस पर फ़ख्र करना चाहिए कि आज हमारे बीच में किशचंदर नहीं है, लेकिन उनकी तख्लीक़ात, उनके अफसाने, उनके नावल, हम आज भी उनको पढ़ते हैं और उनको, उनकी अहमियत और इफ़ादियत को हम समझते हैं। ऐसा अफसाना निगार जिसने उर्दू ज़बान को एक आला मुकाम तक पहुंचाया, उनके बेशतर अफसाने, उनके नावलों के तर्जुमे गैर मुल्की ज़बानों में भी हुए, और हमें उम्मीद है कि आप इससे इस्तिफ़ादा करें, उसके दिगर तख्लीक़ात से भी वाकिफ़ हो, उनका मुताला करें, उससे वाकिफ़ हो, और किशचंदर के नावल निगारी, उनकी अफसाना निगारी से आप इस्तिफ़ादा कीजिए, उनको पढ़िए। इसके साथ हम इस मज़मून को इख्तिताम तक ले जाते हैं। आदाब।